बट मुझे लगता है कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि अगर आप डार्क स्किन्ड हैं, आपके बात करने का लहजा थोड़ा सा अलग है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव कैरेक्टर में, विलनस कैरेक्टर में डाल देते ये हैं. ऐसा है, does ऐसा that है. actually exist? That happens, That yes. prejudice Yes. actually exists? Yes, it does. But then today I was thinking कि main lead हमेशा, and I think this started with Mahira probably because वो हमसफर बहुत popular हुआ था, and Mahira is a fair skinned girl, fair skin, pink cheeks and all. उसके बाद बहुत ज़्यादा लगा, but then I also realized there's Ikra, there's Sajal, Yeah, Saboor, yeah. Sonia, Hussain. Not so light-skinned. Not so light skinned. They've done a great job. Yeah. They're not just surviving, they're thriving. Absolutely. बट जहाँ तक कहानी का ताल्लुक है वो करते हैं. डार्क स्किन और उर्दू का लहजा अलग हो बात करने का. हालांकि मेरी उर्दू इन सबसे बेहतर होती है सेट पे, सबसे अच्छी उर्दू मेरी होती है. बट वो आपको फिर अमीर खातून, और अगर अमीर हैं और थोड़ी सी बाकी लोगों से थोड़ी सी लंबी हैं, रंग अलग लग रहा है, तो ईवल हैं, विलनस हैं. और पॉश हैं और अमीर भी हैं और वो सब फिर तो कुछ. कहानी ख़त्म. हाँ, फिर तो खत्म. कहानी ख़त्म. फिर तो कोई रिडेम्पशन ही नहीं है. और अगर टैटूज हैं तो फिर तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. वो तो इतना बेस लगाती हूँ मैं कि कुछ नज़र नहीं आता. Nothing shows. Nothing shows. Nothing shows. So basically the idea is that the real you leave that person behind at home. Yeah. Because I think the toughest part of the job is to get to the job. And it's not like in Pakistan, हमारे पास vanity vans हैं, जो इंडिया में हैं. Right. वहाँ पे तो मेकअप रूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. Right. एक ही आप जगह पे होते हैं, 12 घंटे होते हैं. 12 घंटे और रोज़ाना उन्हीं लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है. इट्स इम्पॉसिबल कि आप how people say actors tantrums throw करते हैं, या it's tough. You can't survive even in the most beautiful house. You're stuck there for 12 घंटे रोज़ाना. It's tough. Yeah. And then you can't be yourself, because being yourself also means language difference. Yeah. Intellect, हर चीज़ अलग अलग होती है, हर किस्म के लोग होते हैं उधर. So you're putting up an act then. Then you go in front of the camera, you're putting up an act then. Then the third act is when you are asking the channels or the production houses for your money. That's 3 different acts. The real you is left far behind. Whereas I feel the main focus should be just that one acting job that you need to do. Absolutely. The paraphernalia should be handled for you and it should be made easy for you. But ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. Because channels भी, या जो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, they don't want to deal with your managers. They want to deal with you. Yeah. So वो एक शदीद मुश्किल काम है. Payments is such a huge issue. मतलब अभी अच्छी बात ये हो रही है कि एक्ट यूनिफाइड हो रहा है. ब्लेस अतीका एंड ऑल द अदर पीपल, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे. ये वाली लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ेंगी, because they're exhausting. That's the exhausting part. I'm not fighting for your rights is it's exhausting. It's exhausting. And I don't want to keep calling your accountant or your production Absolutely, people. I don't, मुझे नहीं करना ये, but करना पड़ता है. वो एक और एक्ट होता है. So when you say, how am I doing farwa or dealing with the kind of characters I get, I swear to you that's the easy part. Because you sit down and you bring in your skill and craft, if it has value at all. That's my job. Yeah. The rest is the toughest part. And the rest is what you shouldn't have to do. I shouldn't have to do. It should happen in a professional environment automatically. बिल्कुल ऐसा ही है. Also, do you think creatively things have become so tough now because the public at large is not so tolerant? Like talking about Behti Naar, for example, कितने साल पहले वीडियो साकिब मालिक ने बनाई थी for Rashk, right? For Rashk. And it was a very, very groundbreaking, experimental and risque video with Iraj and with Tariq and, with a lot of, I would call it like borderline erotic. It was erotica. आज बन सके बेहती नार? Would you agree to be cast in a बेहती नार video today? If I like the song. Yeah, there you go. If I like the song, if I like the people, yeah, I would. Huh. I would.
बिकॉज मेरे साथ अच्छी बात ये हुई है कि मेरे ऊपर अब वो प्रेशर नहीं है कि मैं 25 ईयर्स की हूँ तो मुझे मेन लीड करनी है और मुझे दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ मुकाबला करना है या लोग मुझे देख रहे होंगे. व्हेन यू डू अ कैरेक्टर रोल यू कैन वेरी स्लाइली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट योर Dure might not be able to get away with. Absolutely. So what all did you do with Farwa? Or is Farwa, as we see her, exactly how she was presented to you? No. Farwa was so loud. She was so loud, the character that was described to me. Loud और बोलने का लहजा थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लगा था. मैं आपने वो जो छोटी बच्ची दिखाई है किसी की बेटी, वो भी वैसे ही बात करी है, फरवा भी वैसे ही बात करेगी. अगर जीक्यू का कैरेक्टर एक है वो वैसे बात करी है, मैं भी ऐसे ही करूँगी. And loud. Amna was supposed to be loud. I was like, देखें जितनी दहशत आहिस्ता बात करने में होती है, चुप रहने में होती है, शक्ल पे एक्सप्रेशन से होती है, वो नहीं आएगी. नहीं आयशा जी, इसमें तो चीखना पड़ेगा. लोगों को समझ कैसे आएगा? समझ कैसे? तो चीखेगी नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा वो अपसेट है. हाँ. तो कुछ सीन्स में मुझे चीखना पड़ा. एंड आई हेट स्क्रीमिंग. मैं असल जिंदगी में तो कभी भी नहीं चीखती हूँ. हेट इट. फिर मैंने सोचा अगर चीखना ही पड़ रहा है तो फिर खुल के चीखते हैं. सो फिर थोड़ा खुल के चीखा. बट बहुत सारी जगहों पे मैंने अपनी मर्जी से देख के कुछ नुआंसेस थे. आई डोंट नो इफ पीपल कॉट इट और नॉट, बट कुछ नुआंसेस थे जो मैंने अपनी मर्जी से किया और मुझे मज़ा आया था. एंड आई ऑल्सो रियलाइज़ कि अगर मैं एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा ख़ुद को सीरियसली ना लूँ तो शायद मेरी एक्टिंग बेहतर हो जाती है. एंड आई थिंक इट फॉर मी इट वर्क्स. दैट्स द पार्ट दैट वर्क्स फॉर मी. आई डोंट ब्रिंग माई ओन morality into my characters. You can't, right? You can't. But you would still do or agree to do roles that were responsible in the way कि negative है तो negative लगे, positive है तो positive लगे. Confuse ना करे audience को. Confuse नहीं करे. Do you watch dramas? No. Do you watch films? I watch films. You watch our films, Pakistani films? Wow, Amna, thanks. No. So there are a lot of dramas I wouldn't watch if I didn't have to review them. So that makes complete sense. And the reason why I'm asking you these questions is that sure, Kaisi Teri Gudgarzi is being watched by millions and being loved by millions, but I feel that it's not appealing to maybe the youth or the literate youth or the educated youth. They can't relate to it. And either they're watching it just for roasting value के ये तो बहुत funny है सारा. Otherwise, they would not be able to relate with it. अच्छा, बहुत roasting हो रही है इसकी. बहुत ज़्यादा. अच्छा, मैंने एक क्लिप देखा था. मैंने एक्चुअली कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए थे जिसमें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे जो लोग बातें लिख रहे थे. And I completely agreed with them. Completely agreed with them कि हाँ है कि toxic, abusive character. And perhaps Mehak's character should have stood her ground and fought him off. वो मैंने पढ़ा. फिर एक हमारी टेलीविज़न की आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक she talked about the fact that it is a toxic character. Totally. I read that. But Amna, again, the point is इस साल मैंने 5 महीने कोई काम नहीं किया because जो मेरे पास 3 स्क्रिप्ट्स आई थी वो I couldn't do it. I just couldn't bring myself to do it. And again, जब आप 5 महीने काम नहीं करते तो आपके finances, your back is against the wall. Absolutely. You need to work to pay your bills. 3 स्क्रिप्ट्स मना कर दी. फिर दिमाग में मेरे आ रहा था अब तो मुझे कोई बुलाएगा ही नहीं काम के लिए कि इसके नखरे इतने हैं. Because this is what we do, we take it personally. Agar if somebody asks you out and you say no, they take it personally. As we see enough on television, As we see it on TV and in real life. And if you refuse a project, they take it personally. फिर उसके बाद 2-3 साल तक नहीं बुलाते हैं. तो मैं डर भी गई थी थोड़ा सा कि कितना मना करेंगे आप. किस किस्म की स्क्रिप्ट का मैं इंतज़ार करूं और कब तक इंतज़ार करूं. Then खुद को थोड़ी सी तसल्ली मैं ये दे देती हूँ कि जब मैंने अपने करियर के शुरू में काम किए थे वो बड़े मज़े के थे. अब किसी ने देखे नहीं देखे is not. Yeah, but you're satisfied as an I'm artist. okay with it. Yeah. Although I think that I've become a slightly better actor now than I was before, because I was too full of myself to be a good actor back then. Right.
Now I'm not. Right. Life has humbled me. So I feel that that vulnerability comes through in my characters. Even if it's a Farwa character, sometimes you'll see the crack in her personality.